Attention please, class 10th A and B. Myself B.V. Yadav. Today our topic is the transportation in human beings, means circulatory system in human beings. What do you mean by transportation? Transportation means movement of the material from one part to another parts of the body. This process is known as the transportation. Transportation in human beings means transportation carried out by the circulatory system. Circulatory system consists of the arteries, vein and capillaries. Heart and blood is called blood vascular system. The system having tubes, nodes and lymph is called lymphatic system. So first of all, what is the blood? Blood is the connective fluid tissue. Blood is the fluid connective tissue. Adult human has 5 to 6 liters of the blood. It is made up of two components. One is the plasma. And second is the blood corpuscles. Blood corpuscles means there are the blood corpuscles also called as the ferment elements, and also two types. First is the red blood cells. Their formation takes place in bone marrow and their structure is as oval and biconcave shape. ये उभयावतल होती हैं लेंस की तरह, ये अवतल लेंस की तरह होती है, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर होता है एंड they help in gaseous exchange, means O2 and CO2 transport, means exchange of the gases such like the O2 and CO2 takes place through the RBC, means that contain as a particular pigment known as the hemoglobin. The oxygen bind to the hemoglobin and known as the oxyhemoglobin and supply whole tissue and cells of the body. In this way, the red blood cells that play important role in gaseous exchange. And these are also, red blood cells is also called as erythrocyte. They are also called as erythrocyte. Red blood cells are circular, biconcave and disc-shaped structure. Mammal RBC is non-nucleated. इसमें कहीं न्यूक्लियस नहीं होता है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं. आपको कहीं इसमें न्यूक्लियस नहीं दिख रहा है, ये नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, नो न्यूक्लियस. Each red blood cells contain about 100 millions of the hemoglobin. Means प्रत्येक आरबीसी में लगभग 100 मिलियन 100 ml हीमोग्लोबिन होता है. जितनी आरबीसी होती हैं इसमें 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है. हीमोग्लोबिन क्या? व्हाट इज द हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन इज आयरन कंटेनिंग प्रोटीन पिगमेंट. मीन्स हीमोग्लोबिन as a iron containing protein pigment which transport O2 and a small amount of the CO2. Normal amount of the hemoglobin in male human is 15 mg per 100 ml of the blood, whereas in female 12 to 13 milligrams per 100 ml hemoglobin is found, means in women. Life span of RBC is 120 days. RBC formation takes place in bone marrow. Second is the white blood cell. इनको white blood cells या ल्यूकोसाइट भी कहते हैं. This is also known as leukocyte. White blood cells are also two types. One is the granulocyte and second is the agranulocyte. Granulocytes, based on their nucleus, it is lobulated structure, means
lobule लो पाया जाता है. On the based on the lobules, they are divided into three categories. First is the neutrophil, and second is the eosinophil, and third is the basophil. This is the basophil. इनका न्यूक्लियस इस तरह से होता है, लाब्यूलेट होता है, लाब्यूल की तरह होता है, ये हार्सू शेप होता है और ये इस स्ट्रक्चर में होता है. तो ये तीन कैटेगरी है, न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल और बासोफिल. These are granulocytes. Granulocytes are WBC. Normal value of the WBC is 5,000 to 8,000 per ml of blood. Lifespan of the white blood cell is 12 hours to several days. Granulocytes possess large sized granule in their cytoplasm. Their nucleus is lobulated. Their nucleus क्या है? इसीलिए इनको एग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जबकि ग्रेनुलोसाइट में एज ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर कुछ ग्रेन्स पाए जाते हैं. एग्रेनुलोसाइट डिवाइड ऑफ ग्रेन्यूल्स, इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं होता है, ये ग्रेन्यूल्स रहित होती हैं. न्यूक्लियस इज विदाउट लोब, इस तरह से लॉबुलेटेड न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है एग्रेनुलोसाइट में. These are two types. First is the monocyte, second is the lymphocyte. Monocyte सबसे बड़ी सेल्स होती हैं WBC. फंक्शन क्या है एग्रेनुलोसाइट का? They play important in offense and defense, maintain the immunity and phagocytosis. ये माइक्रोब्स का फाइगोसाइटोसिस करती हैं, भक्षण कर लेती हैं, खा करके खत्म कर देती हैं. यही हमारी इम्यून सिस्टम है जो माइक्रोब से लड़ने की कैपेसिटी रखती हैं. एंड थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट्स. ब्लड प्लेटलेट्स क्या है? दीज आर कलरलेस नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स. ये जो है रंगहीन बिना न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं, विद साइज ऑफ 2 to 3 मिलीमाइक्रॉन. देयर नंबर इज 0.115 to 0.45 million per ml of blood. Lifespan of the blood platelets is 7 to 10 days. Mechanism of the clotting of blood, कैसे ये जो है ब्लड क्लॉट करता है, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है.